तो आज हम बनाएंगे बैग। ये लंच बॉक्स का बैग रहेगा और ये हमारे पास फैब्रिक है। और ये एक्चुअली फैब्रिक नहीं है, ये है रनर। रनर से हम बैग निकालेंगे। और बैग निकालने के लिए, क्योंकि ये लिमिटेड है हमारे पास फैब्रिक, तो हम इसका पहले 3D बनाएंगे, फिर मार्कर लगाएंगे। मार्कर लगाने के बाद फिर हम इसमें कटिंग करेंगे। चलो फिर मैं 3D बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
3D हमारा बन चुका है। अब 3D के बाद पैटर्न हम अभी डिजिटली पैटर्न तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि पैटर्न जो 3D में बनाया है वो हम इस पेपर पे अब बनाएंगे, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब हमारा रेडी हो गया है। अब हम कटिंग करते हैं। मार्कर भी लगा लिया है और ग्रेन के जो हमने ग्रेन दिया है जिसके अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग हम अब कटिंग कर लेंगे, फिर अब इसका स्टिच करेंगे। तो ये पैटर्न हो गया। अब ये कटिंग करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर तो अब हमारा ये बैग रेडी हो गया है, जिसमें पहले तो हम इसका मार्कर लगा करके पैटर्न से कटिंग कर लिए और फिर हमने इसको स्टिच किया। तो पूरा बैग भी बन गया और ये देखो फैब्रिक भी इतना बच गया हमारा बनाने के बाद। और हमने जो जिपर लगाया है, जिपर को भी फिनिश ऐसे किया है बिल्कुल कि ये रॉ एज कहीं दिखेगा नहीं इसका। जैसे लाइनिंग का भी हमने बहुत अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ, कहीं कोई मार्जिन रॉ एज नहीं दिखेगा। जो सारा हमने लाइनिंग भी लगा दिया ताकि लंच बॉक्स रखें, और वाटर प्रूफ है ये, कुछ भी अगर गिरेगा नीचे तो वो गीला नहीं हो सकता, ख़राब नहीं हो सकता। इसको वॉशेबल बनाया हमने। तो ये बैग रेडी हो गया।